Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, I will describe you family Solanaceae. As you all know, session 2020-21 due to COVID pandemic, many of the chapters or topics get eliminated from the different syllabus, maybe from the biology, maybe physics, chemistry, etc. So from biology, either the whole chapters like chapter 6 or some of the topic like different kinds of family or anatomy or different kinds of morphology of protein systems are not in syllabus from session 2020-21. I am talking about chapter 5 morphology of flowering plants class 11. Listen carefully. Actually there are three types of family in our syllabus. There are three family in our syllabus. Family Fabaceae, family Liliaceae and family Solanaceae. Family Fabaceae, the pea family, that is also known as family Leguminosae. Family Liliaceae, the Lilium family, onion family, and family Solanaceae, popularly known as potato family or Solanum nigrum, that is popularly known as Solanum nigrum or potato family. But from session 2020-21, CBSE board decide only one out of three remain in the syllabus, remain in the chapter 5, and 2 is not necessary from session 2020-21. The 2 family is not necessary. Out of 3 family, that is family Solanaceae, family Fabaceae or family Liliaceae, the one family that remain in our syllabus, that remain in our chapter will be choice based. Will be choice based means it is depend upon our choice, it is depend upon my choice, your choice, that which family will remain in our syllabus and which 2 family is completely out. That is very easy to understand. Each kinds of family is very easy. There is a need to write the vegetative characters, like the characters of their whole body design, and also the morphology of root, stem and leaves, and the inflorescence, floral formula, floral diagram, economic importance. All these are common for all kinds of family. If they remain in our syllabus, then there will be problem to study them, and I have no time. You should also have no time. You should also elaborate yourself, your syllabus, and within very short time you should make your compact note in order to study whatever the time we have. So due to these problems, CBSE reduced the overall chapter and also overall syllabus. Listen carefully. In this chapter, in this video lecture, I will describe you family Solanaceae, and today I have decided to eliminate the families Fabaceae and family Liliaceae because of having they are very complicated and time taking procedure. But I think there is no time taking, that is the well familiar plants and families, but your concept regarding family Solanaceae is clear, and there is only few hints required in order to understand the family Solanaceae. Now back to the family Solanaceae. First of all, you need to write the classification of each family. Here there is no any classification mentioned, but you need to write the classification of family. Your classification will be at the corner. Here I have I have recognized the classification of family Solanaceae, but you need to write the description of classification at one corner of your copy. First of all, the kingdom. Each plants have kingdom Plantae, so it belongs to kingdom Plantae. Division Phanerogamy. Phanerogamy means flower. The plants having flowering formula, that is the having flowering phenomenon. The plants that are able to produce flower is phanerogamy. Okay. Subdivision Angiosperm. Angiosperm, all those kinds of plants in which the seed are coated. The seeds are coated with the seed coat, that is the Angiosperm. The class Dicotyledons. Dicotyledony, and here in short Dicotyledons. There are 2 types of plants, monocot and dicot. The plants having 2 cotyledons are called dicot, and the Solanaceae belong to this family.
Now next is the subclass Gamopiteli. Gamopiteli are those group of flowers, those group of plants in which the petals are gamo in condition, that is petals are fused. Keep in mind, C in bracket, keep in mind the number may be 5, the number may be 6, etc. But the subclass Gamopiteli means the fused petals are common in the family Solanaceae. Genus and species are actually as usual. In bracket between the subclass and genus, there should mention the family, and family are described earlier, that is family Solanaceae. Listen, well popular plant of the family Solanaceae is Solanum nigrum. The well popular plant of the family is Solanum nigrum. Solanum nigrum. On that basis, whole plants family belong to Solanum nigrum family or Solanum group is known as Solanaceae. Solanum nigrum आप लोग देखे होंगे अपने एरिया में मकोई बोलते हैं, ठीक है, और वो काले रंग का होता है पकने के बाद, और हरे रंग का हो जाता है, हरे रंग का रहता है जब वो पकता नहीं, ठीक है, रॉ फॉर्म में रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 1। अभी तो इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ। Vegetative characters may be the herbs, shrubs and tree. Herbs are those group of plants, listen, herbs are those group of plants that having very short in size and very soft in stem. Example of herbs, that is Solanum tuberosum. Solanum tuberosum लिख सकते हैं इसको। Solanum tuberosum किसका है? साइंटिफिक नेम पोटैटो, वो हर्ब्स है, बहुत छोटे साइज का होता है। Solanum nigrum. Solanum nigrum is the shrubs, जो थोड़े से हाइट में बड़े होते हैं, थोड़े से उठ जाते हैं सरफेस से, वो Solanum nigrum की प्रॉपर्टी क्या है? श्रब्स, ठीक है, श्रब्स थोड़े से हाइट में होते हैं, उठ जाते हैं, कमर तक होते हैं। ट्री Solanum grandiflorum एक ट्री है जो इस फैमिली से बिलोंग करता है, लिख सकते हैं कॉपी में। Solanum grandiflorum. Solanum grandiflorum is the tree belong to family Solanaceae. So these are herbs, shrubs and tree. These are the 3 different characteristics of family Solanaceae, and that is commonly known as vegetative characters. Keep in mind. Now back to the property of stem. Listen. Stem are solid, green, erect, branched, hairy, cylindrical और sometime underground in nature. अब एक एक करके सबके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। Stems are solid. Solid means there are 2 types of stems found in our surrounding, in our plants. For example, if the cylindrical stem, for example bamboo are totally cylindrical stem and having a cavity. That kinds of stem is known as the cylindrical stem, that is the having hollow cavity. Or some stems are filled by the vascular bundle and also the ground tissues. That kinds of stem is known as the solid, and family Solanaceae belong to the solid group of stem. Keep in mind. Green. They are green in color. They are solid but green in color. As you all know, the potato, remember the stem of potato, they are green in color. Erect means they सीधे, पूरी तरह से सीधे रहते हैं, ठीक है, वो क्रीपर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल Solanum nigrum, ब्रांचिंग होते हैं, उसमें लैटरल ब्रांचेज निकलते हैं, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांचेज निकलते हैं। Hairy, it is the characteristics of family Solanaceae. So make the star hairy. Hairs, stems ऐसे दिख रहे हैं, ये stems हैं, छोटे छोटे hairs दिखेंगे, hairs, and hairs are the characteristics of family Solanaceae, stems of family Solanaceae. Now
cylindrical, sometime may be cylindrical or underground, sometime may be underground or sometime may be cylindrical. Underground stem is the potato, Solanum tuberosum are the underground stem. The potato is a type of stem that is known as tuber. So these are actually some characteristics of stem. Now back to the characteristics of leaves. Leaves are simple. Actually from session 2020-21 the morphology of root, stem and leaves are not in our syllabus. So I hope you have missed, I know that is you have missed the features of leaves and stem and also the roots, but keep in mind the concepts of simple and compound leaves are, I think, cleared in your previous classes, like in class 9th or class 8th. Simple leaves are those kinds of leaves that are single linking with the main branch, that are single available with the main branch, and compound leaves that having the incision found in the leaves. The incision means they are actually cutted, the having cutted portion, and they are actually look like as like many leaflets are linked together. For example यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर leaves आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं तो ये simple leaf है, और leaves अगर आप ऐसे देखने को मिल रहे हैं, इस तरह से leaves अगर कहीं भी देखने को मिल रहे हैं तो ये compound leaves, simple leaves and compound leaves. So leaves of the Solanaceae is simple. अल्टरनेट, इसका भी कॉन्सेप्ट आपने मिस किया है इस साल सेशन 2020-21 से। ये लीफ स्टेम एंड रूट्स के जो मॉर्फोलॉजी नहीं होने की वजह से ये सब लीफ स्टेम और रूट्स की मॉर्फोलॉजी फैमिली में आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। अल्टरनेट मीन्स देखो तीन तरह के लीव्स होते हैं, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। अब देखो तीनों के बारे में मैं समझा दे रहा हूँ। अगर लीव्स एक यहाँ से निकला है और एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से निकला है, फिर एक उधर से, मतलब यहाँ से निकला, एक इस पॉइंट से एक इस पॉइंट से, दोनों बराबर से नहीं, इसका बराबर ये इसका, माने इसके बराबर से उधर से नहीं निकला, एक यहाँ से एक यहाँ से। दैट काइंड्स ऑफ लीफ इज नोन एज अल्टरनेटिव्स। अगर लीव्स का डायरेक्शन इस तरह से, एक यहाँ से निकले और एक यहाँ से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपोजिट। और लीव्स अगर इकट्ठे किसी टिप पे ढेर सारे गैदर हो जाए, ढेर सारे लीव्स यहाँ पे गैदर हो जाए, जैसे आप कोकोनट वगैरह में देखते हैं, दैट इज द होल लीव्स। सो लीव्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स and one of them is alternate leaf, that is the characteristics of family Solanaceae. Keep in mind. Now back to the X stipulates. जैसे आप देखेंगे फ्लावर में ब्रैक्ट्स, ब्रैक्टियोल्स, ये सब सारे फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वैसे लीव्स में भी छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं। जैसे यहाँ से लीफ निकला है तो यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज स्टिपुल, दैट इज नोन एज stipule, and that stipules is as like the bracts and bracteoles of the flower. So sometimes flowers are known as floral leaves, ठीक है, flowers को कभी floral leaves भी बोला जाता है। The similar characteristics of flowers and leaves are almost same, but in flower the leaf-like structure, that is little leaf-like structure, are actually the bracts or bracteoles, but here in case of leaves the stipules. If stipules are present, then stipulate. If stipules in flowers or in the plants, not flower, if the plants consist stipules along with the leaves, then the plants are known as stipulate. If the stipules are absent, then the plants without stipules in their leaf is known as X stipulate. So the Solanaceae has X stipulate characteristics. Solanaceae has the X stipulate characteristics, that is the common in all kinds of Solanaceae family. Now back to the unicostate reticulate characteristics. Unicostate, costa means होता है vein. Listen, unicostate, the costa means क्या होता है vein. So ये उसका vein है, ठीक है, अगर एक vein है तो unicostate, ठीक है, अगर बहुत सारे वेन है तो मल्टीकॉस्टेट, ठीक है। अगर वो नेटवर्क बनाता है ऐसे, उस वेन से तमाम नेटवर्क निकलते हैं तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट, ठीक है। अगर उससे वेन निकलता है तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट, यानी कि रेटिकुलेट
प्लांट्स के लीव्स की खास बात होती है, उसको आपको ऐसे लेकर के फाड़ेंगे तो टूट जाएगा, बराबर से नहीं फटेगा, तो हो जाएगा रेटिकुलेट। एंड फैमिली सोलेनेसी हैज रेटिकुलेट टाइप ऑफ लीव्स। लिसन, रेटिकुलेट आर द नेटवर्क्स ऑफ वेन्यूल्स, द नेटवर्क्स ऑफ वेन्यूल्स वेन द मिड वेन, यहाँ पे दिख रहा है ये मिड वेन है लीव्स, जैसे ये लीव्स है तो ये इसका मिड वेन, ठीक है। एक मिड वेन है तो क्या हो जाएगा, यूनिकोस्टेट, दो मिड वेन है, चार मिड वेन है तो वो मल्टीकोस्टेट हो जाएगा, और इससे ढेर सारे वेन्यूल्स ऐसे निकले होंगे, दैट इज द रेटिकुलेट वीनेशन। लिसन, पेटियोलेट, पेटियोल लीव्स का क्या होता है, जैसे फ्लावर्स में पेडिसेल होता है मेन अटैचमेंट प्लांट से, वैसे प्लांट्स के लीव्स में पेटियोल होता है, ये आप दिमाग में रखिए। सो दिस वन इज द पेटियोल, दिस वन इज द पेटियोल ऑफ लीफ। Petioles are the linking of leaf with the main plant. Now back to the next, the root. Root are tap type root. From this years फिर वही बात दोबारा बताना पड़ रहा है, इस साल भी रूट के मॉर्फोलॉजी आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो रूट बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एक सिंपल रूट्स होता है, ठीक है, एक जिसको टैप रूट भी बोलते हैं, और एक होता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स थोड़े से मोनोकॉट की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं और उसको आप आसानी से उखाड़ सकते हैं। टैप रूट सिंगल रूट होता है जिसको बहुत जमीन तक अंदर तक गया रहता है, सिंगल एक प्राइमरी जो रूट्स होता है उसका ज्यादा बड़ा होता है, इस तरह से होते हैं टैप रूट। और फाइब्रस रूट बेसिकली बहुत अंदर तक नहीं रहते हैं, थोड़े से, ठीक है। अब गन्ने का, मक्के का, ठीक है, राइस का, ठीक, वीट का अगर रूट्स पुटअप कर रहे हैं, वहां से उखाड़ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, टैप रूट मिलेगा, ठीक है। एंड टैप में फाइब्रस रूट मिलेगा, और बाकी जितने भी डाइकॉट प्लांट है उसमें आपको मैक्सिमम जो है क्या मिलेगा, टैप रूट मिलेगा। मोनोकॉट में फाइब्रस रूट और डाइकॉट में टैप रूट। Video become too longer, that's why there is need to make the part 2 of the video. Listen carefully. And in the part 2 I will begin the concept of inflorescence of family Solanaceae in next video lecture, and that is by means of Solanaceae, family Solanaceae part 2, and this is the family Solanaceae part 1. Thank you.